Assalamu alaikum, dear students. This is the first lesson of third language English, Chanakya and Rakshasa. So first of all, we'll go with pre-reading activity. Tenali Rama was a jester in the court of Krishna Deva Raya. Tenali Rama was a jester in the court of Krishna Deva Raya. What is the meaning of jester? One who jokes. One who jokes. In Urdu, we used to call maskara. So, dear students, he was popular for his witty and humorous tales. He was popular for his witty and humorous tales. So, here the meaning of witty is, in Urdu, समझदार, होशियार and होशियार and humorous, मजाक करने वाला, जारिफाना, and the meaning of tales is कहानियाँ. So he was popular for his witty and humorous tales. He was king's favorite jester and hence he received a lot of valuable gifts from the king. And also he received a lot of valuable gifts from the king. और वो king की तरफ से बहुत कीमती तोहफे भी उसको मिले. This made Tenali Rama an easy target for thieves. One summer night, इसके वजह से this made Tenali Rama an easy target for thieves. अब next Tenali Rama's target was for thieves. One summer night, गर्मी का मौसम जब था तब, when Tenali Rama and his wife were relaxing in their courtyard. At that time, Tenali Rama and his wife they were relaxing in the courtyard. कोर्टयार्ड कहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे वो उस रात को कहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे? कोर्टयार्ड में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड? यू नो द स्पेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. इन उर्दू आंगन और सहन. Tenali Rama noticed that some thieves were hiding in their garden. उस वक्त Tenali Rama क्या नोटिस किया, क्या गौर किया वो कि उनके गार्डन में कुछ चोर छुपे हुए थे. The witty Rama, the होशियार, witty means होशियार. The witty Rama thought of a plan. उसने एक प्लान बनाया, एक प्लान के बारे में सोचा. He said to his wife loudly, वो अपनी बीवी को बहुत जोर से बोला. He said his wife loudly, जोर से, we have to hide our valuable wealth in our well. What he said, हमारे जो भी कीमती सामान है, जो भी हमारी कीमती चीजें हैं, उसे हम एक कुएं में डालकर छुपा कर रखेंगे. See here, we have to hide our valuable wealth in our well. Then brought a big box. Then what he did? Then he brought a big and heavy box from inside the house and dropped it into the well and went back to sleep. फिर उसने क्या किया? वो बड़ा बॉक्स लाया एक, उसके बहुत बड़ा हेवी बॉक्स था. inside the house, घर के अंदर से लाया and dropped it into the well. और उसे कहाँ पर छोड़ा? slowly पानी के कुएं में डाला. well means कुआं. and went back to sleep. फिर वो सोने के लिए चला गया. thinking that the box was containing jewels. तो चोर क्या सोच रहे थे यहाँ? इस बॉक्स में बहुत सारे ज्वेल्स. the meaning of jewels is jewelries, जेवरात, gold jewelries and all like that they thought. The king thought, then thinking that the box was containing jewels, the thieves. फिर चोरों ने क्या किया? देखो यहाँ पर, the thieves drew all the water from the well and pulled out the box. पूरी रात मेहनत करके क्या करेंगे वो thieves, वो चोर पूरा पानी ड्रीप means past tense of drop, पूरा पानी
निकाले बाहर, निकालना, पूरा पानी निकाले, ड्रिप ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल, उस कुएं में से पूरा पानी निकाले, एंड पुल्ड आउट द बॉक्स, फिर उस बॉक्स को भी निकाले। बट दे वेर डिसअपॉइंटेड एज द बॉक्स कंटेन्ड हेवी स्टोन्स। वो नाराज हो गए, डिसअपॉइंटेड। व्हाई दे वर डिसअपॉइंटेड? बिकॉज उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में कुछ नहीं था सिवाय हेवी स्टोन्स के, बड़े बड़े पत्थर थे उस बॉक्स में। They were fully exhausted by the morning. They were fully exhausted by morning. तो पूरा सुबह तक वो exhausted. What is the meaning of exhausted? Tired. पूरा वो थक गए, रात भर मेहनत करके पूरा वो थक गए। They were fully exhausted by morning. Next, Tenali came out in the morning and saw the thieves. फिर दूसरे दिन तेनाली रामा सुबह में आकर उन चोरों को देखा। He thanked them for watering his garden. फिर उसने तेनाली रामा उन सब का शुक्रिया अदा किया कि उसके गार्डन को, तेनाली रामा के गार्डन को पानी डालने के लिए, वाटरिंग फॉर द गार्डन। The thieves were, फिर चोर पकड़ा गए, फिर the thieves were caught, फिर वो दो चोर पकड़े गए। So hope you guys like this story. Do you like this story here? Yes. Here is one more story. So let us study about Chandragupta. In this story, first paragraph, Chandragupta became the king of Magda with the help of very clever man called Chanakya. See, dear students, in the first line, Chandragupta became the king of Magda with the help of a very clever man called Chanakya. सेम तेनाली रामा की तरह एक होशियार शख्स वहां पर भी था, उसका नाम क्या था? चाणक्य। Chanakya's great task was almost done. चाणक्य का अपना एक मकसद वो पूरा ऑलरेडी वो पूरा किया था। We see here when he had placed Chandragupta on the throne. वो चंद्रगुप्ता को उसके तख्त, throne means एक तख्त, किंग की चेयर, उस थ्रोन पर बिठाकर उन्हें अपना मकसद को पूरा किया। Only one thing remained for him to do, और एक ही चीज बाकी थी उसके करने के लिए, वो क्या थी देखेंगे। That was to find a wise and able minister to help Chandragupta to rule the kingdom. See dear students, उसकी बस एक लास्ट जिम्मेदारी क्या थी उसकी, ये एक चंद्रगुप्ता के लिए एक अच्छा एबल और होशियार मिनिस्टर को ढूंढना था। तो दैट वाज टू फाइंड अ वाइज मतलब होशियार और एक काबिल मिनिस्टर टू हेल्प चंद्रगुप्ता टू रूल द किंगडम। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पैराग्राफ। सो लेट अस स्टडी सेकंड। जस्ट पुट फिंगर ऑन द लाइन एंड टेक पेंसिल इन योर हैंड, ओके? If you want, if you don't know the difficult words, I'll say the word meaning. You can write that beside of that word. Okay. So in this second paragraph, his choice fell on Rakshasa. His choice fell on Rakshasa. उसकी नजर किस पर पड़ी? राक्षसा के ऊपर. He selected Rakshasa, the great minister of Nanda kingdom. See here, Rakshasa was the great minister of Nanda kingdom. And Chanakya's choice fell on Rakshasa. So Chanakya decided to select the Rakshasa, and Rakshasa was the great minister of Nanda kingdom. Rakshasa was on the side of Nandas. Nanda also, it's a kingdom. It's also a kingdom. Rakshasa was on the side of Nandas, the enemy of Chandragupta. Here, Rakshasa, Nandas and Chandragupta both are enemy here, and Rakshasa is working for Nandas kingdom. So, the enemy of Chandragupta, who Nandas. Hence, Chanakya had to win him over. At any cost, Chanakya trying to take him for their side. So, dear students, he knew that the kingdom would be safe. तो मैं क्या सोचता हूँ वहाँ पर, राक्षसा को लिए तो हमारा किंगडम बहुत सेफ रहता है।
He knew that the kingdom would be safe if Rakshasa become the minister. अगर राक्षसा हमारे तरफ हमारा मिनिस्टर बन गया तो हमारा किंगडम बहुत सेफ रहता. So he decided to take Rakshasa to the Chandragupta. In the third paragraph, but how to find the whereabouts of Rakshasa? See dear students, first of all you have to write the meaning of whereabouts. Whereabouts means उसके बारे में. We are telling about first of something else. For example, whereabouts means उसके बारे में, किसी के बारे में हम कहते हैं, that is called whereabouts. But how to find the whereabouts of Rakshasa? Whereabouts कहाँ पर है राक्षसा? How to find where he was? So at that time he had been in, maybe he was hiding somewhere. So here he decided he had been in hiding somewhere. कहाँ तो छुप गया राक्षसा? कैसे उसे तलाशना, कैसे उसे ढूंढना? Then what he decided? None but his dear friend Chandan Das knew where he was. उसका एक खास दोस्त था चंदन दास, वो हमें बताएगा. चंदन दास की मदद से हम राक्षसा तक पहुंच सकते हैं. So he decided, but his dear friend Chandan Das knew where he was. Then Chandan Das was not the man to let out secret for anything in the world. चंदन दास एक ऐसा शख्स था जो अपने खास करीबी दोस्त के राज अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था वो हमेशा, मगर उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता. So Chandan Das was not the man to let out secret for anything in the world. किसी भी कीमत पर चंदन दास मुंह खोलने वाला शख्स नहीं था. Next we'll go for the fourth paragraph. However, Chanakya hits upon a plan. चाणक्य फिर एक प्लान करता. Then he hits upon a plan. He imprisoned Chandan Das and announced throughout the kingdom, if Minister Rakshasa does not return within a fortnight, the head of Chandan Das would be cut off. So dear students, what he decided? He imprisoned. Imprisoned means कैद करना. एक कैद करने को imprisoned कहा जाता है. He imprisoned Chandan Das and announced throughout the kingdom, पूरे kingdom के सामने announce करता. क्या करके announce करता? अगर 14 days के अंदर या 2 हफ्ते में हमें राक्षसा नहीं मिलेगा तो चंदन दास का सर काट दिया जाएगा. See here, throughout the kingdom, if Minister Rakshasa does not return within a fortnight, what is the meaning of fortnight? 14 days or 2 weeks. The head of Chandan Das would be cut off. The head of Chandan Das would be cut off. The news spread far and wide like wildfire. The news, see here, the news spread far and wide, far, दूर दूर तक यहाँ वहाँ news spread हुई. कैसे spread हुई? जैसे कि सूखी घास में आग लगाते हैं, हाँ, जंगल की आग कैसे spread होती, wildfire, उस तरह से. The news spread like a wildfire. So next fifth paragraph. In fifth paragraph, a fortnight from that day passed. फिर वो 2 हफ्ते खत्म हो गए उस रात से. And yet there was no sign of Rakshasa coming out of his hiding place. मगर अभी तक राक्षसा अपने छुपे हुए जगह से बाहर नहीं आ रहा था. The next day, Chandan Das was taken to the marketplace. और उसके फौरी दूसरे दिन चंदन दास को कहाँ लेके गए? मार्केट प्लेस में.